Hello beta, let us try to look at today's question. Beta देखो ध्यान से, you're given a matrix A and it is asking then the sum of all elements of A to the power 100 equal. ठीक है, देखो आपको matrix A दिया हुआ है. So let's find A. Matrix is given to you as 0 1 0 1 0 0 0 0 1. बेटा लेट्स फाइंड ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं. सो ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए. बेटा इट विल बी 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू 0 1 0 1 0 0 0 0 1. ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा? दिस विल बी 0 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 0 1. 0 into 1 0 plus 0 plus 0 0 0 plus 0 plus 0 0 0 plus 0 plus 0 0 1 plus 0 plus 0 1 0 plus 0 plus 0 0 0 plus 0 plus 0 0 0 plus 0 plus 0 0 0 plus 0 plus 1 1. राइट बेटा, ये ए स्क्वायर आ रहा है. We are getting this as a square. Let me just check if I have written it correctly or not. 0 1 0 1 0 0 0 0 1. ठीक है, तो a स्क्वायर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1. तो बेटा एक बात बताओ, what will be a to the power 4? It will be a square into a square, right? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो बेटा what will you get? 1 plus 0 plus 0 1 0 plus 0 plus 0 0 0 plus 0 plus 0 0 0 plus 0 plus 0 0 0 plus 1 plus 1 1. You will get this only. Please verify. है ना, ये हो गया a to the power 4. बेटा अगर a to the power 4 निकल गया तो अगेन a to the power 8 भी निकाल सकते हो, राइट? तो a to the power 8 will be a to the power 4 into a to the power 4. You will get same only. ठीक है, तो you will get nothing but you will get identity matrix only. So a to the power 100 maybe you will get identity matrix only. So now you can do the sum of the elements. It will come out as 1 plus 1 plus 1 3. So the sum of the elements will become 3. ठीक है बेटा? ओके बच्चे, थैंक यू.